Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself and also studying well. Students, in our last video we have discussed about the tissues. We have also discussed about the difference between the plants and animals and their tissues and importance of tissues. Okay, so that was the first introductory video of this chapter. Now we are going to read about the plant tissues. Okay, so before starting the plant tissues, there is one question: why does growth of plants occur only in certain specific regions? और ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है. ओके, सो व्हाई इट हैपन्स? दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू विच इज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है, एंड दिस टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स. जहाँ पर ये ग्रोथ होती है स्पेसिफिक रीजन्स में प्लांट्स के, वहीं पर ये जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये पाया जाता है. ओके, एंड दीज रीजन्स आर रूट एपेक्स, रूट की जो टिप्स होते हैं, रूट के एपेक्स जो होते हैं वो, देन शूट या फिर स्टेम जिसको हम कहते हैं, शूट एपेक्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रूट्स और शूट्स के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो होता है, और ये टिश्यू जो है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल से बना होता है. सो द सेल्स इन दिस टिश्यू आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, और इन्हीं रीजन्स में जो है हम देखते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ होती है. ओके, देन लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. सो प्लांट टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, that is meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is again divided into apical tissue, lateral tissue and intercalary tissue. Okay, so apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. So these are the three types of meristematic tissue. So first we will read about the meristematic tissue. So meristematic tissues are made up of actively dividing cells. They are made up of actively dividing cells and they are also called meristems. They are also called meristems. Okay, these meristem or meristematic tissues are responsible for plant growth. They are responsible for the growth of the plant, and they are present at the tips of roots, shoots, or we can say stem and branches. So these three things you remember about the meristems. They are composed of actively dividing cells, and they are responsible for the plant growth, and they are present at the tips of roots, shoots and branches. Now these cells are continuously dividing cells, we know that, and they produce new cells. So when these new cells are produced, so there is increase in the length and the girth of the plant. गर्थ यानी कि सर्कमफरेंस, स्टेम का जो सर्कमफरेंस होता है ये वाला पार्ट, उसका जो सर्कमफरेंस है वो पार्ट जो है वो उसका जो डायमीटर है वो भी इंक्रीज होता है. ओके, तो दिस कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स दे इंक्रीज द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट. देन दिस न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेरिस्टेम्स, दे आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ. सारी सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो इनिशियली बिल्कुल सेम होती है, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर दे स्लोली चेंज and they become differentiated as the component of other tissues like permanent tissues or different types of meristem. So what do you mean by differentiation here? So differentiation का मतलब होता है कि जब cells, meristematic cell जो है वो grow हो जाती है fully और mature हो जाती है, तो वो जो cells है उनको अलग एक structure मिलता है, उनको अलग एक fixed function मिलता है जो अपनी पूरी life वो परफॉर्म करती रहती है. ओके, तो इस डिफ्रेंशिएशन की वजह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है दे गेट चेंज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन हियर. सो ओरिजिनली सारी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो बिल्कुल सेम होती है, बट जैसे वो ग्रो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो उनको नया फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाता है, एंड दैट विल बी कंटिन्यूड थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. ओके, now let's see some characteristic features of this meristematic tissues, that means the cells. So meristems जिनको हम कह सकते हैं, so these cells are similar in structure and they have thin cell wall. उनकी जो cell wall है, here you can see this cell wall is thin and it is made up of cellulose. किससे बनी होती है ये? cellulose से. So they have thin cell walls made up of cellulose.
They are generally round, oval, polygonal or rectangular in shape. You can see here. Then they contain a large and prominent nucleus. उनका जो nucleus है आप देख सकते हो यहाँ पर. This nucleus, it is large and prominent. Every cell you can observe this nucleus. It is large and prominent. Okay. So why it is so, that I will tell you afterwards. Then they contain dense cytoplasm. ये cytoplasm आप देख सकते हैं यहाँ पर in the cell. So they contain dense cytoplasm. Here vacuoles are absent. इन cells में vacuoles नहीं होती हैं. These are absent in these meristematic cells. Now why it is so, that we will discuss afterwards. Then the cells are actively dividing to produce new cells. तो ये जो cells होती हैं meristematic tissues के अंदर, these cells are actively dividing cells, है ना, and they are compactly arranged without intercellular space. यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारी cells है, they are compactly arranged and there is no space in between these cells. सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. दैट मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है यहाँ पर. ओके. वाई डू सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म. इन सेल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है? दिस इज बिकॉज दीज सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. दीज सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. कंटिन्यूसली इनमें डिवीजन होता रहता है और इसीलिए उनमें जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म जो है हम देख सकते हैं. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाई डू सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उनके सेल्स में वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं? व्हाई दे आर एब्सेंट, और इफ दे आर प्रेजेंट व्हाई दे आर वेरी स्मॉल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज these cells do not store any of the food material or waste material. ये जो cells होती हैं वो कोई भी फूड स्टोर नहीं करती हैं और कोई भी वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं होने देती हैं, है ना. एंड दैट इज़ वाई दिस सेल्स लैक वैक्यूल्स. वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? मेनली स्टोरेज. और स्टोरेज का इस सेल में कोई भी नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसीलिए इन सेल्स में जो है वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं. सो रिमेंबर इट. लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेम, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम. सो दिस अपाइकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. स्टेम्स एंड रूट्स के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? It increases the length and girth of the stem and the root. That means it brings elongation. It brings elongation of the roots and stem and causes the increase in height of the plant. तो plant की जो increase होता है height में, it is because of this apical meristem. And this growth of the plant is known as primary growth. इस growth को हम क्या कहते हैं? Primary growth. So elongation in the length of the roots and stems, it is known as primary growth. Then second type of meristematic tissue is intercalary meristem. It is found at the base of nodes and internodes. They are found at the base of nodes and internodes and also at the base of the leaves. Now this intercalary meristem helps in the growth of leaves and internodes. Growth of leaves and internodes. Now what are internodes and what are nodes? You must know about this. So let's see what are nodes and what are internodes. Now you must have seen a plant, its shoot you may have observed. So the place or the point at which a new branch or a new leaf starts growing, it is known as node. So it is node. And you may have seen many nodes. This type of nodes you have seen. So the distance or the space between here one node and this is the another one. So the distance or the space between the two nodes, it is known as internode. इसको कहते हैं internode. Okay. So this intercalary meristem is responsible for the growth of leaves and internodes. Okay. तो ये leaves का और internodes का जो length है उसको increase करता है. Here you can see these are the nodes. ये nodes हैं और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर इट इज़ नोन एज इंटरनोड. सो नोड्स आर द पॉइंट्स और द प्लेसेस ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट वेयर द न्यू
leaves and new branches grow. Okay. Then the last one is lateral meristem. Lateral meristem occurs on both the sides of the stem and the roots. Here you can see this part of the stem and the root. Here it is found. Then lateral meristem is of two types: vascular cambium, and cork cambium. So vascular cambium is found in the plants having the vascular bundles, and cork cambium, it is found in the cork. Okay, cork, you know, it is the protective covering outside the plant, है ना, जो हम जिसको कहते हैं छाल होती है प्लांट्स की, है ना, तो वो जो ट्री की छाल होती है जिसको हम बार्क भी कहते हैं, तो वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इट इज़ नोन एज कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. ओके, तो ये जो है लैटरल मेरिस्टेम, इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट. ये स्टेम और रूट का जो गर्थ होता है, यानी उसका जो सर्कमफरेंस है, उसको इंक्रीज करता है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज एक्चुअली द कॉर्क कैम्बियम एंड व्हाट इज द वैस्कुलर कैम्बियम. Now here you can see the transverse section of stem of a vascular plant, ऐसा plant जिसमें vascular bundles होते हैं. So these structures you can see here, these are the vascular bundles, these are known as vascular bundle. Okay, and these are arranged in this manner in the stem and the root of the plants. Okay, now here you can see this is cambium. This is cambium. This is vascular cambium as it is found in the vascular bundles. Now this vascular bundle consists of these other two types of tissues, that is phloem tissue, which lies outside the vascular bundle here, and the xylem tissue, which lies inside the vascular bundle. This orange color part is xylem, and this brown color part you can see here, it is phloem, and in between this here you can observe this ring like structure, it is cambium. So it is known as vascular cambium. Okay, so vascular cambium जो है it is responsible for the secondary growth of the plant, है ना, it is responsible for the secondary growth of the plant, that is to increase the girth of the plant. प्लांट का जो सर्कमफरेंस होता है स्टेम और रूट का, उसको ये इंक्रीज करता है. देन जो कॉर्क कैम्बियम होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है वो लेयर होता है, इट इज़ cork cambium. It is also known as phellogen. It is known as phellogen, cork cambium. Okay, so this cork cambium produces a protective cork on the outside. और जो cork मैंने आपको बताया जो protective covering होता है जिसको हम bark कहते हैं, तो it is produced by this cork cambium tissue. Okay, so in this way this lateral meristem increases the girth of the stem and the root. Now let's get revised the functions of all the three types of meristem. Apical meristem, you can see here, it is present here. So it brings about the elongation of roots and stems, and it causes increase in the height of the plant, and it is also known as primary growth. This growth is known as primary growth. Okay, then lateral meristem जो है, this one, so this causes the organs like stem and root जो है plants के, it increases the girth, or we can say diameter of these parts, है ना, so it increases the girth of the stem and roots, and this growth is called the secondary growth. This is known as secondary growth. Then what about the intercalary meristem? Intercalary meristem जो कि प्रेजेंट होता है बेस और बेस ऑफ द नोड्स एंड बेस ऑफ द इंटर नोड्स, सो इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स एंड द इंटर नोड्स. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो लीव्स एंड जो इंटर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स, उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द three types of meristematic tissues. Now let's see one activity from your book. So for this activity you will need 2 glass jars, 2 onion bulbs, a scale, scissor and water. So how you have to set, look at the figure. Take 2 glass jars, glass jar number 1 and 2, fill them with water, दोनों को water से fill करना है. Place an onion bulb over the mouth of each jar in such a way that the stem base of the bulb dips in the
water. इसका जो stem है, उसका जो base है stem का, it will dip in the water, and then you have to observe daily. So you will see that the roots develop in both the jars, है ना, from these bulbs, and you have to measure the length of roots daily. आपको इन roots का जो length है वो daily आपको measure करना है. Then on 4th day, what you will do on 4th day, remove 1 centimeter long apical portion of the roots of bulb 2. सेकंड नंबर का जो जार है उसमें से आपको रूट्स जो है इस बल्ब के वो आपको कट करने हैं, है ना. 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर आपको इसमें से कट करना है, ठीक है. एंड अगेन मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स ऑन द 5th and 6th day. तो आफ्टर 2 days ऑल्सो continuous you have to measure the length of roots in jar 1 and jar 2. So after 5 to 6 days, what you will observe in jar 1 and jar 2? Let's see the observations. So it will be seen that the roots of bulb 1 they continue to grow. बल्ब जो जार 1 में जो बल्ब है ऑनियन बल्ब, इसके जो रूट्स है दे आर कंटिन्यूइंग टू ग्रो ऑन द 5th and 6th day ऑल्सो. तो यहाँ पर जो ग्रोथ है रूट्स की वो कंटिन्यू हो रही है. एंड इन केस ऑफ जार नंबर 2 द रूट स्टॉप ग्रोइंग. यहाँ पर जो ग्रोथ है रूट्स की वो रुक गई है. ओके, सो डिफरेंस हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि जार 1 में रूट्स की ग्रोथ हुई है और जार 2 में रूट्स की ग्रोथ नहीं हुई है. सो व्हाई इट हैपन? So it happened because we have cut the root tips of these roots from this jar number 2. तो जार नंबर 2 में जो अनियन था उसके हमने रूट टिप्स को कट कर दिया था, है ना. रूट टिप्स को हमने कट कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेजेंट जो अपाइकल मेरिस्टेम है ना, अपाइकल मेरिस्टेम जो कि ग्रोइंग पार्ट्स में होता है ना, स्टेम और रूट्स के जो टिप्स होते हैं उनमें, ठीक है. तो हमने उसको रिमूव कर दिया एंड दैट्स व्हाई दीज रूट्स विल नॉट ग्रो फर्दर. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? सो कंक्लूजन इज हियर इन plants apical meristem is responsible for the growth of length of roots, है ना. so what we can say, जो apical meristem होता है it is responsible for the growth of length of the roots. Okay, so students, here we have finished the meristematic tissues. In our next video we will read about the permanent tissues, their types and their functions. Okay, so if you will find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So we'll meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.